Good evening, friends. I'm Dr. Arun, and this evening we are having very interesting webinar on sexual education and several aspects of sexuality, which is sometimes many people feel it as a hoodoo and hardly they try to speak, even though practically everyone is more or less untouched with this uh, with this phenomena. So we are having Reema Ahmad with me, and I'm known to Reema Ahmad because we both were together for TEDx Nagri in February month. If I'm not wrong, it was 16th of Feb. And I met first of all and very impressive personality. And I was so surprised, and that's why our association is even till now. I would like to formally introduce Reema Ahmad as she graduated from Lady Sri Ram College for Women. It's very prestigious college in Delhi. So she is a graduate in English honors and then masters in English from there. And she is also B.Ed from Agra University. And she is trained and love talking about reproductive and sexual health abuse, that is TARSI, for the comprehensive sexuality. She is also co-founder along with Amita Malhotra about Candidly.in. And she's one of the facilitator, and that site gives a lot of aspects of gender, sexual abuse, sexuality, and how these manifest in media and through cultures. And she is currently writing a book, so she's a writer also. I wish a lot of books might be coming in near future also. She's a poet. I know Urdu ki poet काफी famous मैंने पढ़ी है. She is several time TEDx speaker, and that is prestigious platform. You can understand being a TEDx speaker, and also on the TV. And recently she was interviewed for BBC, British Broadcasting Corporation, for BBC Telugu, and I wish the association will go on, on and on, for future. And she also uses neuro-linguistic programming and mental space psychology to delve deeper into belief and identity levels of clients for further helps and to choose what is best for them. And she gives a lot of, training sessions for corporate sessions also, lot of, counseling for families on the aspects of sexuality and sexual education. So welcome to you, Reema, being with us. And so my first question goes to you like this, what exactly is the sexuality education, So how I can understand and how even a common person can understand what is sexuality education. So Reema, please. Yeah. So sexuality education, when you first hear it, so we imagine that it is only about sex and reproduction, and it's not. You can consider it to be like a very large umbrella, which we in our terms call comprehensive sexuality education, which involves all the aspects of growth, from body positivity, body self-image, to adolescent issues, to gender issues, to sexual orientation, and also how you interact with other people sexually, how you think sexually, what your gender orientation is, abuse and abuse awareness. Bullying is also a part of sexuality education. Then understanding the difference between healthy and toxic relationships is also a part. Sorry for that. That is also part of sexuality education. And then how to communicate with children, and how to communicate, within families, an understanding of sexuality in a way which is non-judgmental, which is not fear-based, and which is rights-based and has a very positive approach, is in a nutshell what we call sexuality education. I refer to it as life education, because I feel it touches upon every aspect of our life as we grow from, toddlerhood to adulthood and even later. Okay, nice. You could summarize this. मुझे अच्छा लगा, और अपने जैसे कि हम सब आगरा से हैं, और आगरा एक बी कैटेगरी का सिटी है जहाँ पर इस तरह की चीजें का मोटिवेशनल टॉक होना एक हेल्दी साइन है. Why it is important in our life, in some way, why it is so important? What is the importance of this issue? It should be
along with everyone otherwise? इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारी जिंदगी में चाहे कोई भी पड़ाव हो, जब हम 12-13 साल के होते हैं, जब जब हमारी प्यूबर्टी का मतलब शुरू होती है, या हम सोसाइटी में, फैमिली में अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर रहे होते हैं, या हम स्कूल में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, फिर जब रिलेशनशिप्स एंड क्रशेज एंड हाउ यू फील विद इन योर बॉडी इमेज, आपको अपने अंदर कैसा लगता है, डू यू फील settled with who you are, or are there any Changes. negative associations with your body? And then when you start involving yourself in sexual activity, which is not separate from emotional involvement or intellectual involvement, how do you feel, whether there are difficulties or not in marriages, in relationships? फिर जब आपके बच्चे होते हैं तो आप उनसे कैसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जो कि हर किसी के साथ होती है ना, थिंग्स लाइक नाइट फॉल, और व्हाट यू फील अबाउट मास्टरबेशन, और पीरियड्स क्यों होते हैं, या फिर सेक्स कैसे होता है, या बच्चे कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें एक हेल्थी क्यूरियोसिटी का हिस्सा है, जो कि समाज ने इस पे बड़ा टैबू लगा दिया है कि ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मगर जितनी कम बात होती है उतना ज़्यादा हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम ऐसी चॉइसेस करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और हम दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमें प्राइवेसी का मतलब नहीं पता, हमें कंसेंट का मतलब नहीं पता, हमें बाउंड्रीज का मतलब नहीं पता। और आपसी रिश्तों में बजाय प्लेजर के, बजाय इक्वालिटी के, बजाय हमदर्दी के और मोहब्बत के, हम एक दूसरे को बहुत बुरी तरह हर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर एक इंसान के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मर्द है या औरत, लड़का है या लड़की, या वो अपने आप को ट्रांसजेंडर की तरह एसोसिएट करता है, या वो एसेक्सुअल है, या वो LGBTQI कम्युनिटी का है, तो कोई भी शख्स हो, जस्ट बीइंग ह्यूमन इज इनफ to want to know about sexuality, because it is a very major aspect of our lives, and if we don't know about it, we end up not evolving in beautiful ways, and also not feeling a sense of joy within ourselves and how we relate to other people. So I feel it is very, very important, and it needs to be talked about, especially in areas where it's not talked about. Okay. See, I'm a biologist by profession, so I'm just asking, many things are instinct, they are genetical. Like I can say several of the animals do know this reproduction phenomena by the virtue of their genetics, or I can say instinct. So I similarly, मैं ऐसे सोचूं कि humans में भी ये instinct behavior रहता होगा. Then why we need to, educate? How can you explain this? Yeah, Reema. Yeah, I will try and explain that. See, the way we have evolved over millennia has changed, and there was a time before agricultural societies set in, before the setup of families and communities, where people lived in a sort of commune, जहाँ हर चीज शेयर होती थी, जहाँ रिलेशनशिप का भी वेल डिफाइंड नहीं थे, जहाँ पे कोई भी किसी के साथ रह सकता था, किसी का भी किसी के साथ संबंध होता था, और सब एक तरह से एक कम्युनिटी में एक दूसरे के बच्चे पालते थे, एक दूसरे की सेहत का, खाने पीने का ध्यान रखते थे। मगर अब जब हम इस स्ट्रक्चर में रहते हैं, इस स्ट्रक्चर में कैसे सर्वाइव करना है, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए और खुद को एक्सप्रेस भी करते हुए, और दूसरों के साथ भी इस तरह का बिहेवियर रखते हुए कि हम उनको तकलीफ ना पहुंचाएं, उन्हें हार्म ना करें, उन्हें हरास ना करें, उन्हें अब्यूज ना करें, क्योंकि अब्यूज इतने लेवल्स पे होता है कि ये कहना कि वो सिर्फ एक चीज होती है वो बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए अब हमें ये समझना जरूरी है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, वी आर एग्जिस्टिंग इन फैमिलीज, वी आर एग्जिस्टिंग इन स्कूल कम्युनिटीज, वी आर एग्जिस्टिंग इन ऑफिस कल्चर्स। तो अगर हम जंगलों में रह रहे होते हैं तो एक इंस्टिंक्ट समझ में आती है कि भाई चलो इंस्टिंक्टिव है, we need to mate, we need to reproduce, and it's all okay. It used to be okay thousands and thousands of years ago, but now with the baggage of morality कह लीजिए, या मजहब कह लीजिए, या फिर जो समाज कहता है ये सही है या ये नहीं सही है, इन सब चीजों के बीच आप खुश कैसे रहें, आप सुरक्षित कैसे रहें, आप दूसरे को हानि ना पहुंचाएं, ये सीखने के लिए इन सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है। और अगर आपको कभी चोट पहुंची है बचपन में या जवानी में, असॉल्ट हुआ है, अब्यूज हुआ है, हर्ट हुआ है, उससे हील कैसे करें। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं,
उससे बाहर कैसे निकलें, अपनी आइडेंटिटी कैसे एक्सप्रेस करें, अगर वो जेंडर का सवाल है या सेक्सुअल ओरिएंटेशन का सवाल है। तो इसलिए ये जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारी दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स वेज में इवॉल्व हो चुकी है। It's not Yes. simple anymore. There are many threads of a larger narrative. Yeah. Yeah, good. Reema, my next question is, I wonder, like हम सबके लिए एक रोल मॉडल होता है या कोई हमारी एक चॉइस के लिए कोई एक इंट्रिग्विंग पॉइंट होता है जो हमें हमारे फील्ड में ले जाए, जैसे मैं कैसे साइंटिफिक फील्ड में है. So how did you choose this field, you know? Like you were in the Lady Sriram College, and then how did you come in this extraordinary topic that many, yeah. So So how did you I, come to this I field? I did not come to this, it came to me. Very simply put, Okay. क्योंकि जो भी मेरी जिंदगी में हुआ, I have a history of abuse as a child, and then Oh. also mental health issues when I was very young, and all of that. And then I was in a very toxic marriage for 8-9 years. So I realized that Oh. the choices I made, influenced by Hmm. society, by culture, by the things I had been taught to believe as right, had actually Mhm. really hurt my sense of self, had really limited me in terms of growth, both professional and personal. And which is why I thought, okay, so when I was 15, 16, 17, who would have I wanted to listen to? What, which sort of conversation would have I wanted to hear, and how it would have changed my life. And so that drove me to become someone who can be that person for young people, for children, for young adults, for parents, somebody who is open minded, non judgmental, who doesn't morally judge you and treat you like aap bure hain ya aap gande hain. For me, there is no right and wrong. There is only resourceful and unresourceful. There is only damaging or non damaging. And that is the perspective I have. So, which opens up my field to anybody. So I Okay. wanted someone like that when I was young, and I didn't have anybody like that. And as I grew, I decided कि भाई मुझे ये करना है. और पहली मैंने अपनी जब abuse awareness workshop करी, जो कि तुक्का थी बिल्कुल, मैंने खुद पढ़ाई हाँ. करी, खुद रिसर्च करी, आगरा में ही हुई थी. तो turning point ये था that a gentleman, he must be in his 40s at that time, he came to me after the workshop and he said कि अगर आज आपने अपने बारे में बात नहीं कही होती, 40 साल से जो मैं हाँ. दबा के बैठा हूँ और जो मैं सफर कर रहा हूँ, वो मैं कभी नहीं कह हाँ. पाता. And that was the point I realized that this can Oh. change lives. And if I have the ability and if I have the gift to communicate to people the way I do, then I need to learn. And I spent the next 3-4 years learning about it. So that's how it happened. Learning. Yes. And then you meet, skillful, your professional And career in this way. yeah, I and then wish you good luck. when you say yes to the universe, when you collaborate with a right intent, with a good intent, and then when you have friends like I do, I have this beautiful friend Amita who pushed me, who saw in me what I didn't see in myself, and she pushed Oh. me कि नहीं ये करो ये करते हैं, और फिर रास्ते खुलते गए और कारवां बढ़ता गया, वो वाली बात है. And then you set up this candidly.in, right? Set This it up site. in Yeah. 2017, and we've done many workshops. Our few first workshops were in Agra. They were very Hmm. well received. बहुत मतलब कामयाबी हासिल हुई थी. फिर थोड़ा ट्रैक बदल गया, मैं पढ़ने में लग गई, लिखने में लग गई. But now I'm back, working in the city, and it's an amazing feeling. Okay. Uh, Reema, this Agra is not a metro city. And although we have a Taj Mahal that is the sign of love throughout the world, so do you feel that our city and our people in Agra, they are ready to for something like this? They can verge upon. क्या वो ऐसा start करें? ऐसा जरूरत है? बिल्कुल आपके जरूरत है. अनुसार आपका कहना है? और मेरा ये ख्याल है कि जरूरत ही नहीं है, लोग इंतजार में हैं, लोग ताक में हैं कि कुछ ऐसा हो ताकि वो जो दबाए बैठे हैं, जो वो समझ नहीं पा रहे या जो वो जानना चाहते हैं, वो कह तो सकें. क्योंकि आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए या पीडियाट्रिशियन के पास चले जाइए, वो दवा लिख देगा, वो आपको तरीके नहीं Yeah. बताएगा कि भाई ये कर सकते हो, अपना बिहेवियर ऐसे चेंज कर सकते हो, ये चीज ट्राई कर सकते हो. विल नॉट गिव दैट मच टाइम एंड अटेंशन
to the problem, in hand. And by the response that I received for the 3-4 workshops I did in 2017, all of them went full. All of them. दिल्ली में हमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जितना हमें आगरा में मिला, जो कि सबूत है अपने आप का कि यहाँ लोग तैयार हैं, स्पेशली पेरेंट्स जो कि ये स्ट्रगल करते हैं कि कैसे बच्चों को हम इस अनसेफ एनवायरनमेंट में बड़ा करें। तो उन्हें वो लैंग्वेज सीखनी है, उन्हें इच्छा है कि कोई उन्हें बताए कि भाई क्या करना है। और फिर TEDx में जो मुझे रिस्पांस मिला, एक बच्चे ने आके मुझसे कहा कि मैम डोंट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। So that in itself is proof, and I have started, developing clients over here. They started coming to me, so I am very hopeful, and I am very open to, whatever may come next. Okay, Reema, I have a query. Your Twitter account is having Meera word name. Okay, Meera. How this Meera is there? No, that's Why you're not put Reema? Instagram. Yeah, Instagram. Yes, account ID. Instagram is Meera. What you have learned from Meera? Meera, a sense of devotion, complete devotion, Yes. and acceptance of who I am. Like, I know certain things about myself may not be acceptable to my parents or my siblings or the people around me, but that is okay. I am devoted to a certain way of being, and I will keep working towards it. That is one. And ever since I was a child, I loved the name Meera. I loved all of her poetry. I loved all of the stories around it. And when I made the Instagram account was also at a time where I was reinventing myself from somebody who was merely a victim of something that happened in the past to somebody who was very proud of herself, of her journey, who was, ready to give back to the universe, to the world, to the community. So I thought, okay, let me turn it around in a way where it is also Reema, but it is also Meera. And I love both names. It is something that I own, that I gave myself. Yes. Yes. So, Okay. रीमा, आजकल न्यूज़पेपर्स में हम बहुत सारी स्टोरीज हर रोज कभी-कभी देखते रहते हैं चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड, कि एक छोटी बच्ची का कभी रेप हो जाता है या उसका मर्डर हो जाता है या दोनों, या उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई कुछ इस तरह की हरकत करता है. सो इन योर ओपिनियन, लाइक आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे पेरेंट्स को स्कूल्स में जब बच्चे जाते हैं, कोएड वाले स्कूल या कहीं पर, उन्हें किस तरीके से ये टीच करना चाहिए उन छोटे छोटे बच्चों को जो यंगस्टर्स होते जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए एक माँ को, एक बाप को भी. Not only it is true for girls, I can say it is equally for boys also. Yes. And दूसरा इसी में एक क्वेश्चन है, you have to tell us about good touch and bad touch, ये इसी से रिलेटेड है. यस जी बिल्कुल, दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है. तो पहले तो मैं ये कहूंगी, टेकिंग अप द सेकंड पीस ऑफ योर क्वेश्चन, कि ट्रेडिशनली इंडिया में जब सेफ्टी एजुकेशन, बॉडी सेफ्टी एजुकेशन शुरू हुआ, तो somebody somewhere came up with this definition of good touch and bad touch, which from the place where I learned, where I got my education, which was Tarshi, and the way I explored the nuance of touch, I feel like it is very limiting. Touch in itself is not a bad thing. The intent of the touch decides whether it is safe or unsafe for a child. तो सबसे पहला तो मैं ये कहूंगी पेरेंट्स से कि इस लेबलिंग से बचें कि ये गुड टच है, ये बैड टच है, क्योंकि इसका एक फॉल आउट ये हुआ है कि बच्चों ने आपस में जो एक नेचुरल ह्यूमन अफेक्शन होता है, हग करना, हाथ पकड़ना, एक दूसरे के कंधे में बाहें डाल के चलना, या वो प्रॉक्सिमिटी, वो क्लोजनेस, वो इंटीमेसी जो एक बच्चे के नेचुरल ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो खोते जा रहे हैं. और बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं स्कूल्स में कि उसने मुझे छू लिया और उसने मेरा पेंसिल छीन लिया, इसने बैड टच किया, ये गंदा बॉय है, ये गंदी गर्ल है. The whole thing gets blown out of proportion. I feel, and it is my opinion, and I have practiced it with children and parents, that the way to teach these things is from a perspective of one that is without fear. अगर आप बच्चों को ये सिखाओ कि दुनिया बहुत बुरी चीज है और तुम्हें बच के चलना है, तो वो अपने आप में एक तो लिमिट हो जाएगा, फिर पूरे टाइम डरता रहेगा और एंजाइटी बिल्डअप होती है. पेरेंट्स में भी एंजाइटी बिल्डअप होती है और बच्चों में भी एंजाइटी बिल्डअप होती है. मगर अगर आप बच्चों को ये सिखाएं कि तुम्हारी बॉडी में कुदरती इंस्टिंक्टिवली, जैसे मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ ये वाली चीज, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे एंटीनास हैं और ये एंटीनास बहुत स्ट्रांग हैं. ये एंटीनास तुम्हें बताएंगे कि क्या चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है. जो फियर इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं ना, फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट जो नेचर ने हमें दी है,
पसीना छूटने लगता है, सांस तेज हो जाती है और उल्टी जैसी फीलिंग होती है। तो बच्चों में इंस्टिंक्ट बहुत शार्प और बहुत स्ट्रांग होती है। From a distance they recognize it, and if we teach them to trust their instincts, they can potentially save themselves from some violence. Now that said, बच्चे पावरफुल नहीं होते, दे कैन बी फोर्स्ड, दे कैन बी कोर्स्ड, दे कैन, उन्हें बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, ट्रस्ट की एक पोजीशन को और रिलेशनशिप्स को अब्यूज किया जा सकता है। मगर हम उन्हें ये अश्योरेंस दें कि जो भी तुम मुझे आके बताओगे मैं तुम्हारा यकीन करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। If kids are taught that, because the way abuse happens is कि abusers जो होते हैं ज्यादातर वो बच्चों को शामिल कर लेते हैं abuse में कि ये तुम्हारी वजह से है, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है इसलिए। और अगर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है तो उसके लिए बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि ये इंसान तो मुझे चाहता भी है और इस इंसान ने मुझे हर्ट भी किया, तो इसमें से कौन सा सच है, और उसमें फंस के चुप हो जाता है। 90% of the cases, kids tell their parents, or there are visible signs that there is something wrong. Parents choose to ignore it because the perpetrator is often someone from the family in 84% of the cases, and they don't want to deal with the social tamasha of it all, and therefore they say, "भूल जा, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है." कितना परसेंटेज आपने बताया रीमा? 84%. कितना परसेंटेज? 84% of the abuse that happens is from known people around the child. Okay. Is it true in case of rural and urban equally both? और इसमें किस में ज्यादा है, urban and rural? Yes, it was a survey conducted in 2011, and I can share exact numbers later, but this is what the survey stated, that 84% of abuse happens in households, and this number is fairly accurate across the world. And 6 out of 10 children will have been abused to some extent, emotionally, mentally, or sexually in their lives at some point in their lives. And out of those 6 children, the ratio of girls and boys is fairly equal. और जो मिसकंसेप्शन है कि बॉयज के साथ तो क्या होता ही नहीं, बॉयज करते हैं, बॉयज के साथ होता क्या है, क्योंकि बॉयज को इजाजत नहीं है रोने की, लड़कों को तो कभी दर्द होता नहीं, मर्द को तो कभी दर्द होता नहीं, और लड़के जब बताते हैं तो उनपे कोई यकीन करता नहीं, उन्हें चुप कर दिया जाता है कि चुप रहे, ये तो स्कूलों में होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हॉस्टल में होता ही है, ये तो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, ये तो पार्ट ऑफ रैगिंग है, फलाना ढिमकाना। मगर कोई ये नहीं सोचता कि उसका हमारे जहन पे क्या असर होता है और आगे जाके रिश्ते बनाने में, मैरिजेस में, रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम होती है और क्या ट्रॉमा होता है। Abuse is not something which is time specific. It happens once, but the chain of reactions it sets can last up to adulthood, way beyond adulthood, where if there is no awareness and there is no help, you can spiral into depression, anxiety, suicidal behavior, drug abuse, alcohol abuse, and also abusing other people, because for you that is the norm, that is what you have learned. So I feel कि बच्चों को एक जजमेंट और फियर बेस्ड पर्सपेक्टिव से हटके पढ़ाना जरूरी है कि आप लड़कियों को सिर्फ दबाएं ना ये कह के कि तुम घर में रहो because you will be raped and you will be abused. Instead tell them, if this happens to you, you can come to me, and teach them things like self defense, things like recognizing कि कोई कैसे आपको फुसला सकता है, बहला सकता है, things like कि अगर तुम्हारा चाचा, मामा या मामी, चाची, आंटी जो भी है, अगर वो तुम्हारे प्राइवेट एरियाज को छूती है या छूता है तो ये गलत है और तुम्हें हक है ना बोलने का, तुम्हें हक है शोर मचाने का। हम बच्चों से उनका बोलने का हक ही छीन लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, बच्चे को कोई बुआ या कोई मासी पसंद नहीं है, ठीक है, किसी बात से वो चिढ़ गया उनकी और बच्चा कहता है कि मैं पैर नहीं छूऊंगा, मैं सलाम नहीं करूंगा, मगर आप जबरदस्ती करते हैं, कैसे नहीं करेगा, कितनी बड़ी बात, कितनी बुरी बात है, कितना बदतमीज है, कोई शर्म नहीं है, कोई तमीज नहीं है, आपने दबाया, आपने उसे ये एहसास दिलाया कि तुम्हारा ना कहना अलाउड नहीं है। क्या मैसेजिंग गई बच्चे के दिमाग में कि मैं ना नहीं बोल सकता, चाहे जो होता रहे मैं चुप रहता हूँ। और हमारे कल्चर में तो ये बचपन से लेके बड़े तक होता है कि बेटा चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, भुगतते रहो, शांत रहो, चुप रहो। तो भाई मैं तो अपने बच्चे को नहीं तमीजदार बनाती, मैं तो कहती हूँ जो तुझे पसंद है उसके पास जाओ, जो तुम्हें पसंद है उसकी गोद में बैठो, जो तुम्हें नहीं पसंद है उससे कह दो प्लीज रिस्पेक्ट माय बाउंड्रीज। If we respect our kids' boundaries, is only when we can teach them
that it is okay for them to say that, you know what, you need to step back. So, yeah. Okay. Okay, good. This issue, even I was not aware so much. I tell you one thing, my PhD is in the reproductive health. Yeah. I did my PhD at National Institute for Research in Reproductive Health Okay. of Indian Council of Medical Research Institute, ICM Institute in Mumbai. Okay. But my PhD was on totally molecular biology, working on DNA, RNA, and protein. But this part was not there. But I still remember the basic physiology Yeah. part of reproduction. और ये बहुत See, ही nowadays, छोटी सी चीज मैंने आपको बताई है, ये बहुत नुआंस्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर yes, बच्चे के लिए अलग वर्कशॉप होती है, 4 से 7 साल के लिए अलग, 8 से 12 साल के लिए अलग, 12 से, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं नुआंसेस और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं। तो ये भी okay, चीज समझना जरूरी है कि वन टाइम लेसन नहीं है, पढ़ा दिया हो गया, नहीं, कंसिस्टेंट मैसेजिंग होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े hmm, होते हैं उनको अलग अलग तरीके से इस बात को समझाना और नॉर्मलाइज करना कि भाई दिस इज योर वजाइना, दिस इज योर वल्वा एंड दिस इज योर पीनस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दीज वर्ड्स। अगर बच्चे को भाषा नहीं सिखाओगे कि जैसे खूनी है या नाक है या मुंह है, तो भाई उसमें क्या शर्म है? तो बच्चे बोलेंगे ही नहीं कि यहाँ yes, टच किया, कि वहां टच किया, कि कैसे टच किया, because they don't have the language for it. So that is also part yes. of how we teach, or I teach, safe and unsafe touch and all of that. Yeah. Okay. See, my next question is about Indian movies. Indian, not Bollywood. It is Hollywood also. So movies gives lot of ideas to the public, and public में वो फिर magnify हो जाते हैं. So in that way, what would you say that what is the trend changing in the acceptability against the transgender, lesbian, homosexual, LGBT, straight? There are several such Yeah. such parallel words, Yeah. and they are not only nowadays the government forms are not having even male or female. Now third category is also being added, Yes. transgender. So I do hope कि आगे चल के और भी इससे ज्यादा कैटेगरी पूछने का भी कभी ट्रेन चलेगा क्या? सो इन द वर्ल्ड दी ये जितने भी कैटेगरी हैं इनमें क्या चेंज हो रहा है? ये बढ़ रही हैं या कम, बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? अगर बढ़ रही हैं तो इसका एंड कहाँ पर है? ये कहाँ तक एक जाएंगी इस तरह बहुत की ही कैटेगरी? इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। ये काफी ज्यादा हम इसको, जब हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर वाली वर्कशॉप्स होती थी तो हम ये सोचते थे कि आज किसी ने डिमांड करी दैट मुझे आइडेंटिफाई किया जाए फीमेल की तरह, या मुझे आइडेंटिफाई किया जाए क्वियर की तरह, या मुझे आइडेंटिफाई किया जाए एसेक्सुअल की तरह, तो क्या ये इसी तरह से बढ़ती रहेंगी? एंड देन व्हेन LGBTQIA विल आल्सो एक्सपैंड मोर एंड मोर. So that is या one way of looking at this. So terms and terminology is only a way of expressing what has not been expressed before. जब पहले इन सब चीजों के बारे में चर्चा हुई नहीं थी, इनकी डेफिनेशंस अलाउड ही नहीं थी, गे शब्द ही एक गाली होता था और बुलिंग का सबब होता था लोगों के लिए, तो दे फॉट फॉर दैट राइट टू एक्चुअली decide for themselves what their identity is, which is where the need for vocalizing and creating terminology for specific sexual orientation or gender identities, that need comes from there. तो वो बढ़ती है, घटती है, इससे किसी भी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, human physiology, human psychology, and also saying that okay, everybody is different and they have the choice to be whatever they want to be. हो सकता है कि कोई लड़की के अंग लेके पैदा हुआ हो लेकिन वो खुद को आइडेंटिफाई करता हो एज लड़का, दैट इज अ जेंडर चॉइस दैट यू मेक, एंड दैट जेंडर एंड सेक्स आर डिफरेंट. आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं और आपका जो जेंडर आइडेंटिटी है वो दोनों फर्क होती है, और हमारी समाज में इन दोनों को इंटरलिंक किया जाता है कि अगर तुम लड़की पैदा हुए हो तो तुम्हें ये बिहेवियर करना है, अगर लड़का पैदा हुए हो तो ये बिहेवियर करना है. इस स्ट्रक्चर को इन टर्मिनोलॉजी ने तोड़ा है और फ्रीडम दिया है कि लोग जैसा चाहें वैसा बन सके, जैसा चाहें वैसे कपड़े पहन सके, जैसा चाहें वैसे पार्टनर्स चूज कर सके, और अगर उनका मन नहीं है सेक्सुअली एक्टिव होने का तो वो भी ना करें. सो उसकी अपनी चॉइस. उसकी अपनी चॉइस. आई डोंट थिंक वी नीड टू बॉदर अबाउट कि 50 और टर्म्स हो जाएंगे. होने दो टर्म्स. इट इज अबाउट पीपल टू से दैट आई हैव नॉट हैड अ वॉइस बिफोर, now I have an identity, I expect some recognition, and I expect respect, which should be due to every human being irrespective of whatever their choices are.
So that is my take Okay. on terminology. Basically, people who don't understand these terms need to understand this simple concept कि कोई कैसा व्यवहार करता है, कोई किसके साथ संबंध रखता है, नहीं रखता है, कोई लड़का लड़की की तरह कपड़े पहनता है या लड़की लड़के की तरह कपड़े पहनती है या लड़का गुड़ियों से खेलता है और लड़की जो है क्रिकेट खेलती है. It is all okay. It's fine. As long as it's a choice, as long as it's not forced, it's okay. और हम घबराते इसलिए हैं क्योंकि जब कोई भी स्ट्रक्चर टूटता है, कोई भी नई चीज उभरती है, तो इंसान डरता है कि अब कैसे चलेगा समाज. समाज चलता आया है, चलता रहेगा. और चलता रहेगा. Is that changes are happening, and we need to be more accepting of those changes. We need to understand that, you know, in a society which we call equal or egalitarian or blah blah blah, there needs to be a place for every human being, irrespective of their race, their color, their gender identity, sexual identity, religion, whatever it is. So that is what these terms fight for. That is what these terms say. And I feel like it's high time it happened. I mean, अब नहीं होता तो कब होता. Okay. आज सवाल मीडिया का, तो मीडिया में अभी भी बहुत कैरिकेचरिंग है कि गे लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, लेस्बियन लड़कियां मर्दों की तरह कपड़े पहनती हैं. बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट तरीका है चीजों को देखने का और समझने का. बेसिकली उसमें कोई नुआंस है नहीं. एक तरह का मजाक उड़ाना है, एक तरह का उनको कैरिकेचर करना है, जैसे कि मुसलमानों को दाढ़ी वाला और टोपी वाला दिखाएंगे और जो होगा तो जोक्स मरते रहेंगे उसके ऊपर पूरे टाइम. तो ये वही तरीका है, लेंस एक है कि भाई ऐसे होते हैं ये लोग. तो we should respect. हाँ, उससे मैं we all should respect. मगर धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है, चेंज आ रहा है ऑल्टरनेट सिनेमा में और डॉक्यूमेंट्रीज में और मूवीज के थ्रू ज्यादा नुआंस आ रही है, डेप्थ आ रही है, क्योंकि जब स्पेस मिल रहा है लोगों को नई नई तरह की पिक्चरें बनाने का या नई तरह की किताबें लिखने का और नई तरह की चीजें एक्सप्लोर करने का, तो फिर अपने आप अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज सामने आती जा रही है. इट इज अप टू द पब्लिक व्हाट दे मेक ऑफ इट. It is up to the people how accepting they are and how equal they want to be. Right now, I can't say that is happening in our country, but I am hopeful that it does in the future. Yeah, I've seen in Europe, it's quite, respectable society. Yeah. And if I'm not wrong, then Indian government has started recruiting those, these various categories of other sexual orientation people in the government jobs. और मेरे ख्याल से अब तो चुनाव भी लड़ा है कई लोगों ने. दे हैव बिकम मेयर, कई जगह मेयर तक बने हैं ट्रांसजेंडर, जज बने हैं, प्रिंसिपल्स बने हैं. मगर हमको ये समझने की जरूरत है कि कितनी लंबी लड़ाई है. ये लड़ाई 1960s में शुरू हुई थी, and this fight has claimed so many lives, so many gay people have killed themselves because transgender people have killed themselves because of the way they were being treated, because of the life that they were living, and there was so much suffocation, and that is where all the activism has come from. There are groups of people who are dedicated, जिनका जिंदगी भर का काम ही यही है, हक के लिए लड़ना, कोर्ट में लड़ना और गवर्नमेंट एजेंसी से लड़ना. ये अपने आप नहीं हुआ है. गवर्नमेंट अगर इतनी मैग्नानिमस होती तो फिर तो मतलब जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है. ऐसे है नहीं. But as a scientific purview, if I think about, then human brain and mind, it's separate. वो सभी का सेम ही होगा. So उन सबको भी इस मौके में देना चाहिए. Even I think US में तो आर्मी में भी रिक्रूटमेंट होता है, and आर्मी में भी they are soldiers. Even इंडिया में भी ऐसा अगर होता है तो अच्छी बात है. हाँ, इट्स लाइक दैट कि आप इस चीज से, मैंने रिसेंटली मूवी देखी थी एक एयरफोर्स फीमेल पायलट के ऊपर. तो द फर्स्ट एयरफोर्स फीमेल पायलट, उसमें बड़ा अच्छा सीन था. वो कहती है कि मुझे प्लेन उड़ाने के लिए ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, मुझे अक्लमंद होने की जरूरत है, मुझे टेक्निक आनी चाहिए. तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे डिसाइड करते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है? आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करेगा कि आप कोई काम करने लायक है या नहीं है? वो तो आपकी क्षमता है ना. वो क्षमता तो इंसान के अंदर होती है. वो उसकी किसी लड़की के साथ रहने से या लड़के के साथ रहने से या ट्रांसजेंडर होने से या किनर कम्युनिटी के होने से नहीं डिसाइड होती. वो तो उसकी अपनी एक इननेट कैपेसिटी है जो दिखती भी है. So it's like that. I've seen, like especially this recent BBC and other videos. You are intimacy therapist,
you say is an intimacy therapist. What does it mean, for a common man? Would you like to explain this? Yeah, I would like to explain with a very example from my childhood. My mother is a gynecologist. She practiced in this city for Okay. close to 30 years, Dr. Saida Naqvi. So I remember her Okay. telling me one incident in childhood कि एक कपल, उनके पास कपल्स बहुत आते थे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए और ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए. तो जो गांव की भाषा होती है ना, तो उसमें सेक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं होता. संभोग किताबों में लिखा होता है. संभोग का इस्तेमाल आम लोग नहीं करते हैं. तो औरतें जब मम्मी के पास आती थी तो ये बोलती थी कि हमें बात करने में दिक्कत होती है. Such a beautiful term for sexual exchange. बात करना, communicating sexually. So it could mean 10 different things. So how I connect that to being an intimacy therapist is that an intimacy therapist is somebody who, if someone is having problems expressing their sexuality within a relationship or outside of a relationship, within their body or in communication with other people, an intimacy therapist is someone who can try and find out where the problem is. Is it at a physiological level? Is it at an emotional, psychological level? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर अब्यूज या ट्रॉमा या सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो इमोशनल ब्लॉक्स हो जाते हैं. या फिर कंडीशनिंग होती है, जैसे कि लड़कियों को बड़ा करा जाता है ये सोच के ना कि ये पाप है और ये मत करो, ये तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है. सो दे एंड अप हेटिंग देयर ओन सेक्सुअलिटी. They end up hating the fact that they have desire. And males, on the other hand, are encouraged to, explore it without any boundaries, without any limitations, where they often become aggressive and violent in interpersonal relationships. तो उससे क्या होता है, कोई भी आपके रिश्ते हैं, आपका चाहे शादी का रिश्ता है, चाहे वो गैर शादीशुदा रिश्ता है, कोई भी सेक्सुअल रिश्ता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, somebody, a couple or one person can come to an intimacy therapist and discuss what is bothering him or her. They can come together and together we can find out a way where they can be more harmonious with each other and within themselves. So it's basically newer ways of finding how to communicate sexually. बात करना. So that is what I do. Okay. I explore newer ways of communicating between men and women or whoever it might be. So I am there, I guide and I help and I open up newer ways at looking at problems, and I use NLP for that, I use mental space psychology for that, and traditional psychotherapy. Whatever fits, whatever works, and we find a way together to be more peaceful and live happier lives. That is the whole purpose. Yeah. So there's a question about how conservative parents, even nowadays there are a lot many conservative parents, how they should adopt the strategy, how they can teach this sexual education to their growing children, उन्हें कैसे स्मार्ट होके इस तरह का काम करना होगा, या फिर जस्ट भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? भगवान भरोसे छोड़ेंगे तो फिर होता रहेगा ना जो हो रहा है अभी भी. अब्यूज चलता रहेगा, रेप चलता रहेगा, लोग शादियों में घुट के जीते रहेंगे, लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटीज के साथ घुट के डिस्पेयर और डिप्रेशन और एंजाइटी में जीते रहेंगे, और एक समाज को दिखाने के लिए झूठी तस्वीर इंसान पेश करता रहेगा कि मैं बहुत खुश हूँ. अब अंदर अंदर उसका जो हाल है वो वही जानता है. तो माँ बाप को ये चाहिए कि पहले तो ये समझे, रिकग्नाइज करें कि उनका अपना ब्लॉक कहाँ है. हम एक तरीके से बड़ा किया गया है, जिस तरीके से आज पेरेंटिंग होती है 20 साल पहले वो एक्सेप्टेबल नहीं थी. माँ बाप का बच्चों को गोद में लेना या बहुत ज्यादा प्यार करना पब्लिक में बड़ों के सामने बुरा माना जाता था, मगर आज ऐसा नहीं है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव द कैपेसिटी टू इवॉल्व एंड चेंज एंड बिकम मोर अवेयर. तो हमारे अपने ब्लॉक्स क्या हैं, उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ये होता है कि हमें किस चीज से उलझन और परेशानी होती है. अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक मूवी देख रहे हैं और उसमें कोई इंटीमेट सीन आता है, अगर हमारे दिमाग में ये ट्रिगर जाता है हे भगवान राम राम छी, तो मतलब आपके दिमाग में कुछ बैठा हुआ है इसको लेके. पहले तो उसे नोटिस करिए, फिर उसे घुरे दिए, फिर उसे समझने की कोशिश करिए कि भाई मैं ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ. और अगर मैंने यही मैसेजिंग अपने बच्चे को पास ऑन की तो क्या उसकी लाइफ के लिए हेल्दी होगा? विल ही और शी हैव अ गुड सेक्सुअल लाइफ? Will have enjoy this aspect of humanity which is very very beautiful. मसला ये है कि सेक्सुअलिटी को हम सिर्फ लिंक करते हैं सेफ्टी से, अब्यूज से और बच्चे पैदा करने से. ये कभी बच्चों से डिस्कस ही नहीं करते कि भाई ये बहुत जॉयफुल एस्पेक्ट है जिंदगी का, जिसमें आपको इतना प्लेजर मिल सकता है, आप इतना प्लेजर दे सकते हो. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें, अपने आप को बच्चों की जगह रख के कि भाई हमने क्या क्या मिस किया
हमारे साथ क्या क्या हुआ, तो उन चेक्स और बैलेंसेस को हटा के एक खुले दिमाग से एक माहौल बनाए ऐसा कि चाहे जो आपका बच्चा आपके Okay. पास लेके आए, चाहे वो ये पूछे कि फलानी गाली गाली का क्या मतलब होता है, या इस बात का क्या मतलब होता है, ये पॉर्न क्या होता है, या सेक्स क्या होता है, बजाय उसको चांटा मारने के और उसको दो गाली देने के और उसको बदतमीज कहने के, आप थोड़ा सा थमे, सोचें, और आपको नहीं पता है तो आप कहें मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ, लेकिन बताएं जरूर, ताकि आपके घर में Okay. ऐसा एनवायरनमेंट हो कि बच्चा खुल के सवाल पूछे। अगर नहीं पूछेगा तो कहीं और जाएगा, गूगल के पास जाएगा या दोस्त के पास जाएगा। अब वहां उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके लिए क्या नॉर्मलाइज हो रहा है। ज्यादातर बच्चों के लिए रेप कैसे नॉर्मलाइज होता है, बिकॉज दे वॉच इट ऑन पॉर्न। Half of porn is filled with rape. It's filled with child rape. It's filled with animal rape. It's filled with all sorts of very, destructive stuff where there is no, discussion or no expression of warmth, of connection, of love, of respect. That is such a need for sexual connection. तो अगर आपको वो चाहिए कि आपका बच्चा जो भी उठा ले समाज में से, तो ठीक है, आप चुप रहिए। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को एक बेहतर नजरिया मिले, वो खुश रह पाए, हेल्दी रह पाए, प्रोटेक्टेड रह पाए, तो फिर तो अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। और अगर Okay. मुश्किल आ रही है तो किसी की मदद ले लो, जिसने ट्रेनिंग ली है इस चीज में, जिसको आता है बात करना। खुद हिचक रहे हो तो किसी और से कह दो कि भाई। और आजकल के जमाने में किसी के पास एक्सक्यूज है नहीं, जैसे कि ये लाइव चीज चल रही है, ऐसे कितने लोग देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। 50 साल पहले लोगों के पास एक्सक्यूज था कि ना इंटरनेट था, ना किताबें थी, ना अलाउड था बात Exactly. करना। आज के टाइम पे अगर Yes. कोई माँ बाप ये कहते हैं कि भाई मेरे से तो नहीं होता ये सब, so they are just hiding, and they are asking for trouble, and They're not honest enough. they're not honest enough, and they're setting their kids up for hurt and abuse and difficulty later on in life. So if we don't want that for our kids, we'll find the strength to change. Okay, Reema, recently on 29th of July, Yeah. new education policy of India is released, okay, and we will be following new guidelines and new suggestive, guidelines for the reframing and reshaping this education. If suppose you are a, counselor and you are some of the, having capacity to give suggestions to the education policy, so how would you modify the courses, course curricula, other than curriculum, maybe in the co-curricular and extracurricular activities, what you would like to add upon so that आजकल के जो भारत देश के जो बच्चे हैं उनमें ये एजुकेशन साइड बाय साइड चलती रहे, इसे क्या मॉडिफिकेशन आप सजेस्ट करना चाहोगे अपने तरीके से? देखिए, इसको देखने के दो तीन तरीके हैं। एक तो कि आप जो एक लाइफ स्किल्स होती हैं वो मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में से, चाहे वो लाइफ स्किल पैसे कमाने और पैसे बचाने और फाइनेंशियल लाइफ आप कैसे बताते हैं उसके बारे में हो, चाहे वो लाइफ स्किल्स इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में हो कि गुस्से को कैसे मैनेज करते हैं, कि एंजाइटी को कैसे मैनेज करते हैं, कि अगर आप पिट रहे हैं घर पे तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, या फिर वो सेक्सुअलिटी और अब्यूज और बुलिंग को लेके हो। ये सब लाइफ स्किल का हिस्सा है, लाइफ एजुकेशन है। इनको असिमुलेट करने का सारे कोर्सेज में एक बहुत आसान तरीका है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर सोशियोलॉजी है, या फिर सोशल साइंस है, तो उसमें वो पर्सपेक्टिव्स ऐड कर दीजिए और एग्जाम्पल्स देते देते पढ़ाएं बच्चों को कि इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है। और एक हर चीज पे सवाल उठाने की कैपेसिटी बच्चे के अंदर पैदा करें, जो बिल्कुल बंद हो गई है हमारे देश में, जहाँ बच्चा सवाल करता है टीचर उसे बंद कर देती है। एक टाइम था जब सवाल पूछना इंटेलिजेंस की निशानी होती थी, अब सवाल पूछना इज डिस्ट्रप्शन ऑफ क्लास and undesirable behavior. So if you shut that down, the natural human tendency to question ideas which were set 50 years ago, which are not applicable now, is not welcome. So if we create an education system where kids are encouraged to question and ask कि भाई इस कहानी में ऐसा क्यों होता है, कि why I may be causing a lot of trouble by saying things like that, but when we were in college we were encouraged to actively question everything. For example, we were reading the Ramayana as a text, as a simply a text, and we were taught to question that why is Sita made to suffer the way she does, why does she have to prove her chastity,
Now to Oh many yes. people it will be like an anathema कि भाई क्या कर रहे हो. But आज के aspect में you are thinking from a feminist perspective that why does a woman have to prove that she is pure? What about the men? Why is purity even an issue? Why is, you know, sexual purity even an idea? Is the concept of purity even real? What is pure? What is not pure? That is one example. इस तरह की कई कहानियां होती हैं जिसमें मैंने सीबीएसई की किताबें देखी है और बहुत सारी किताबें देखी जिसमें इतना बकवास होता है, इतना बकवास होता है, और वही चीजें बच्चों को हम सुबह दोपहर शाम खिला रहे हैं, ठुस रहे हैं. तो अगर हम क्वेश्चन करने की जगह नहीं देते बच्चों को तो वो वही चीजें रिसाइकिल होकर उनके सिस्टम में जा रही है. एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चनिंग कैपेसिटी बढ़ाएं और आप इन सारे लाइफ स्किल्स को लेसन्स के साथ साथ इनकॉर्पोरेट करें. दूसरा तरीका ये है कि आप एक एक्टिवली अपने स्कूल में ऐसा काउंसलर रखें या फिर ऐसे रिसोर्स पीपल रखें जो शुरुआती दौर से सेशंस लेते रहें बच्चों के साथ, बुलिंग पे, अब्यूज अवेयरनेस पे, मेंटल हेल्थ पे, एंड इट इज वेरी नॉर्मल. इट्स नॉट लाइक कि काउंसलर के Yes. पास बच्चा जा रहा है तो बच्चा पागल है. इट्स लाइक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो जैसे हम मैथ्स टीचर से, मैथ्स सर से प्रॉब्लम पूछते हैं तो काउंसलर से पूछ लेते हैं. इसमें क्या बड़ी बात है? So I have suggested that in Agra schools, and it has not been received very well because most schools do not even admit that there are problems like abuse happening. There are problems like extreme bullying and violence happening, and they say कि हमारे स्कूलों में तो भाई ऐसा होता नहीं है और हम तो बुकलेट थमा देते हैं बच्चों को और वो बुकलेट काफी है. भाई बुकलेट भी तो घर जा रही है ना. पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है, टीचर्स का पर्सपेक्टिव क्या है? टीचर्स के भी अपने बहुत सारे सोशल कंडीशनिंग और बैगेज होता है इतना सारा, तो वो किस सोच से आ रहे हैं? तो टीचर्स ऑल्सो नीड टू बी ट्रेन टू डील विद द न्यू करिकुलम एंड टू ओपन अप देयर माइंड्स एंड टू लुक बियॉन्ड moral and social ideas of what is right and what is wrong, and accept each child the way they are and recognize things like bullying and abuse and harassment, and take it in a way where it is part of everyday discussion in classrooms, that you can't pull a girl's totty like that. It's not okay. Respect her boundaries. You should ask her permission. Similarly for girls, that कि लड़के का तुम ऐसे क्यों मजाक उड़ा रही हो? It's not okay to make fun of somebody like that. Respect people as an individual. जैसे स्विमिंग के लिए बच्चे जा रहे हैं तो लड़कियां अलग जा रही हैं स्विमिंग के लिए, लड़के अलग जा रहे हैं. लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलना दिया जा रहा है. ये स्कूल का नाम नहीं लूंगी. ऐसा होता है. ये होता है. Yes. और लड़कों को क्रिकेट के लिए फोर्स कर रहे हैं. लड़कियां जब बोल रही हैं हमें क्रिकेट खेलना है तो उन्हें टीचर बोल रही है लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती. What are you teaching? You are teaching that one gender is unequal than other gender. टीचर्स खुद बुली करते हैं. अगर कोई बच्चा आवाज उठाता है तो उसकी वो हालत की जाती है. मेरे बेटे के साथ हो चुका है स्कूल में, that he said because he is learning from me, he used to say कि what is all this? You should allow the girls to play cricket, and they were like, you're going to teach me. Oh. You're going to teach me, how to be. So that kind of bullying happens where any child who is even a little bit different is picked on, is made fun of, and that is okay. The teacher doesn't feel कि इसमें कुछ करना चाहिए. Teachers उल्टा ये कहती हैं कि बेटा पिट रहा है तो पिट लो, कोई बात नहीं. I have heard this with my own son in his own school कि पिट रहा है तो पिट लो, तुम तो समझदार हो, क्यों पिटे भाई? आप काउंसलिंग करिए, आप बुलिंग अवेयरनेस लाइए, क्यों पिटे? कोई एक बच्चा, कोई भी बच्चा क्यों पिटे? मेरा बच्चा या किसी का बच्चा या और अगर किसी का बुलिंग बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है तो पता करो क्या चल रहा है, घर पे क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है. प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक है. पढ़ाई इज नॉट अबाउट लुकिंग एट अ चाइल्ड एज अ होल. That this is a wonderful opportunity to create a human being who is well balanced, Yes. who knows how to be happy, and who knows how to protect himself. It should be not only IQ. Yeah. It should not be not only intelligence. It should be like emotional maturity and social responsibility in the individual. That gives holistic education in a person. Bilkul. Okay, Reema, I would like to ask, what counseling methodology you use for counseling your clients and, your sessions that you perform here and there. तो देखिए ट्रेडिशनल तरीका साइकोथेरेपी का ये है कि आप सवाल पूछते हैं और आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं जो भी क्लाइंट है उसके लिए बोलने का. वो बोलता है और कुछ अपना मन हल्का करने से मदद मिलती है, कुछ चीज़ों को कनेक्ट करने से पास से मदद मिलती है,
मैं साइकोथेरेपिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मेरे पास साइकोलॉजी की डिग्री है। मैं एक काउंसलर हूँ और मैं एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ। तो और जिसके लिए मैं आगे और बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करना अभी बाकी है। लेकिन उससे जो मैंने सीखा है वो ये है कि अगर आप सिर्फ बात करते रहते हैं, सिर्फ बात करते रहते हैं, तो काफी हद तक आपको हल नहीं मिलता। ठीक है, मैंने कह दिया, एक बार डिस्कस कर लिया, दूसरी बार डिस्कस कर लिया, जो मेरे अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसके लिए मैंने दवाएं भी खा ली, उससे मेरा वजन भी बढ़ गया, उससे मेरी तबीयत भी खराब हो गई, ये है वो है। लेकिन आगे क्या करूँ? तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, एक साइंस है, और इट्स नॉट अ वेरी न्यू ओल्ड साइंस। इट्स लाइक 40-50 years old, but it is so well developed. It is the study of the structure of subjective experience. मतलब चीजों को हमने कैसे समझा है, कैसे जाना है, अपनी इकोलॉजी में, एटमॉस्फेयर में, फैमिली से हम लोग कैसे अफेक्ट होते हैं, उन चीजों को कैसे अपने दिमाग में सुनते हैं, सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, और कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो लैंग्वेज कितनी पावरफुल हो सकती है और न्यूरोलॉजी पे आपके कितने असर कर सकती है, आपके बिहेवियर्स में पैटर्न्स बना सकती है, उसकी स्टडी है NLP। और मेंटल स्पेस साइकोलॉजी है कि आप ये समझते हैं कि आपका जैसे फिजिकल स्पेस होता है वैसे मेंटल स्पेस होता है, और उस स्पेस में आप चीजों को इमेजिन करके और विजुअलाइज करके घटा बढ़ा सकते हैं उनके इन्फ्लुएंस को, चाहे वो लोग हों, चाहे वो प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो इश्यूज हों। इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है, लाइक योगा और मेडिटेशन, इट इज अ प्रैक्टिस, but with a good trainer you can achieve results very quickly. So for me, these are tools that I use when I see there is a block and there is a sort of unresourceful tendency. In NLP there is no good or bad, there is no negative or positive, there is only feedback, and we use that feedback to probe where the block is. There is no telling the client what to do, there is only showing the client कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, and then asking questions. So what can you do about this? So how has this worked for you? And in a way, gently pushing the client to understand that he himself has the capacity to change a certain set of behavior, which he thought was कि मैं तो ऐसी हूँ। NLP ये मानता है कि ऐसा ही कुछ नहीं होता है। You can evolve, you can change, you just have to be aware and accepting that you can change. That is what I use mostly, and I'm also learning how to use the body to create more awareness and flexibility. So that is something I will go on to learn as a practitioner, as a master practitioner. And then with abuse awareness and sexuality, those counseling skills are something that I was trained in. तो वो थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लेकिन वो भी यही है कि आप सोल्यूशन बताते नहीं हैं, आप प्रॉब्लम बाहर निकालते हैं, और फिर क्लाइंट खुद समझता है कि मेरे अंदर ये टेंडेंसी है और मैं ये खुद कर सकता हूँ। So it's like enabling rather than helping. That's the method that I use. Yeah. Okay, so probably our time is getting up. This is for 1 hour, and I'm so thankful. I'm so thankful कि आपसे इतना सारा सब कुछ सीखने को मिला, because ये इशू बहुत ज्यादा कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आता है, and I'm sure आपकी वीडियो को सुन के बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा. Okay, thank you so much. I have so many questions. Yeah, there are so many questions from the viewers, but due to paucity of time, I will discontinue it. I would like to just add that I am very accessible. I am on Facebook and I am on email. I have my site Candidly, and it is on Facebook. So you can use that to reach out to me to book sessions or trainings or whatever. And I'm also beginning practice in Agra from next month. And so physically I will be available for sessions, and it would be great to begin this journey in my city with my people. And I'm really excited. And you are a celebrity. If someone put your name on Google and YouTube, there are ample places. Celebrity kuch nahi. I'm a lifelong learner, and I want to stay a learner. It keeps me grounded. So I'm grateful. Jo bhi zindagi ne diya Thank you so much. Thank you so